Very good morning, students. Today we will be doing revision of your chapter 8 from your geography book, and it is India, climate, vegetation and wildlife. So we will start the revision with the basic terms which are being used in the chapter, and after discussing the important points in the chapter, you can go through the explanation of the whole chapter, right? So let me first start with the main terms which are being used in this chapter. Like in this chapter, we need to know the meaning of vegetation, what is the meaning of weather, what is climate, what are the major seasons which are recognized in India. Then we need to understand why are forests necessary for us, and what is the importance of the wildlife in the economy of a country and in human life also. We will also see about the various wildlife sanctuaries, bird sanctuaries we have across the country, right? So if we start with, we will let's start with the major seasons which are recognized in India. Cold weather season, which is winter, and which with the span of which is like 3 months, which starts from December till February. Then we have hot weather season, that is summer, which stays from March to May. We have southwest monsoon season, that is rainy season, which is from June to September. Then in India, we have season of retreating monsoon also, that is autumn, and that comes in the month of October and November. Here, I would like to make you, you to register that India is considered as like having monsoon kind of climate. Right? Monsoon type of climate. Talking is considered as a country which is having monsoon type of climate. When we talk about climate, we are talking about the average weather condition which has been measured over many years. And when we talk about weather, it is about day-to-day changes in the atmosphere, which may include temperature, rainfall एंड सनशाइन. तो आपको बहुत ही क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेदर और क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस है. इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा माना जाता है? मॉनसून क्लाइमेट माना जाता है इंडिया का, और यानी कि जो एवरेज इसका माना जाता है. और वेदर के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो डे टू डे चेंजेस होते हैं, राइट? और ब्रॉडली जो मेजर सीजन्स हैं, आपको उनका स्पैन पता होना चाहिए, आपको उनके मंथ पता होने चाहिए. Next thing which is very important, which you need to focus over here, you need to understand what is the season of retreating monsoon, yeah, what is autumn. So when the winds move back from the mainland to the Bay of Bengal, as I told you that in the main season, that is southwest monsoon season, the main rainy season is from June to September, and it is also known as southwest monsoon season. इसमें क्या होता है? This season marked the onset and advancement of the monsoon. इसके अंदर the winds from Arabian Sea and Bay of Bengal, they like move towards the land. वो मेन लैंड की तरफ मूव करती हैं और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती हैं, और जब ये विंड माउंटेन बैरियर से स्ट्राइक करती हैं तो रेनफॉल अकर होता है, राइट? और ये वेस्ट की तरफ टुवर्ड, ये साउथ से चल के आपका वेस्ट की तरफ मूव करती है, इसलिए इनको साउथ वेस्ट मानसून सीजन भी बोला जाता है. और देन वी हैव द सीजन ऑफ रिट्रीविंग मानसून, या जिसको हम ऑटम बोलते हैं. उसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर विंड जो होती है, दे मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, राइट? और यही सीजन होता है जबकि तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में इंडिया का रेनफॉल जो है वो रिसीव करते हैं. रिमेंबर कि ईस्टर्न कोस्ट पे आपका मेन रेनी सीजन जो कि साउथ वेस्ट मानसून है, उस टाइम वहाँ रेनफॉल नहीं होता. जो ईस्टर्न कोस्ट है, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर आपका रिट्रीविंग सीजन के अंदर, रिट्रीविंग मानसून जब होता है, ऑटम तब जब होता है, तब वहाँ पर आपका रेनफॉल होता है. तो दिस वॉज अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. और आपको ये भी समझना है कि किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है उसकी लोकेशन पे, उसका ऑल्टीट्यूड क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एंड व्हाट आर द रिलीफ फीचर्स ओवर देयर, उन पे डिपेंड करता है.
And important lines, important 1 mark question which are there, like which is the coldest place in India, right? And name few coastal places in India having moderate climate. Which is the place in India which is having like which receive the world's highest rainfall. Everything is there in your book. And when we have done the chapter, I had made you to underline these important lines. Like we have earlier underlined that Mawsynram in Meghalaya receives world's highest rainfall. So these lines you need to focus. Again and again I suggest you to go thoroughly read the lesson, because as and when you completely read the chapter, the things get imbibed in your mind. तो वही हमारा फोकस है. आप अभी भी चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़िए, मेन जो लाइंस अंडरलाइन किया उनको फोकस कीजिए. ठीक है. आपको पूछ सकते हैं नेम टू वेरी हॉट प्लेसेस इन राजस्थान, जैसलमेर है, बीकानेर है. इस तरह के क्वेश्चंस जो है 1 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, एंड बिलीव मी बहुत सारे जो हैं वो आएंगे. देन मूविंग अहेड, व्हाट वी नीड टू कवर द नेचुरल वेजिटेशन. लाइक वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग. तो ये जो प्लांट लाइफ है दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है. सो इसके अंदर आपका शर्ब से लेके, बुशेस से लेके, और आपके ऐसे टॉल ट्रीज, पाम ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, जो हर तरह का, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री ऑफ हैविंग वेरिड काइंड ऑफ सॉइल, वेरिड काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड वेरिड काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स. तो वेजिटेशन भी डिफरेंट है, वेजिटेशन भी बहुत वेराइटी है उसके अंदर, right? Because different type of natural vegetation are dependent on different climatic condition, and you know that we have variety of climatic condition in India. तो उसकी वजह से हमारे पास जो वेराइटी है वेजिटेशन की वो बहुत ज़्यादा है. अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेटिक कंडीशन, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट. So due to varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation. और इस नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, देन वी हैव ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, वी हैव थॉर्नी बुशेस, वी हैव माउंटेन वेजिटेशन, एंड वी हैव मॉनग्रून फॉरेस्ट. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यू नीड टू नो व्हाट इज द अदर नेम फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. क्यों इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोलते हैं? क्योंकि एज द नेम सजेस्ट दैट दे रिसीव हैवी रेनफॉल. And the trees over there in these rainforests are so dense that even the sunlight is unable to reach the ground, and because of that they are very meshy sort of places. So and they always appear green, because all the trees don't shed their leaves in particular season, any particular season. तो उसके important trees क्या हैं, कौन से parts में है, ये है. Later on I will explain in this video only. I will explain all this thing in this all this vegetation in detail once again. Then our focus will be on why are forests important. Very well we all know that forests are very useful and they perform various functions. They are the supply house of oxygen that we breathe. They absorb the dirty carbon dioxide, and absorbing carbon dioxide, they are helping to maintain the climate of the temperature of the earth. So in way they are helping us to maintain the life on the earth. Then the roots of the plants bed the soil, and thus they control soil erosion. Apart from this, forests provide us with timber for furniture, fuel, wood, fodder. They provide us medicinal plants, herbs, lac, honey, gum. And above all, forests are the natural habitat of wildlife. So coming on to wildlife, like as we have variety of forest over here, similarly we have huge variety of species of animals, and a large varieties of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects, and worms which dwell in the forest. Right? Here you need to once again remember that tiger is our national animal. It is found in various parts of country. Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lions, elephant, and one-horned rhinoceros roam in the forest of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Then camel and wild asses are found in Great Indian Desert and Run of Kutch. Peacock is our national bird. You know that we have several bird sanctuaries, several wildlife sanctuaries all over the India, because we need to protect
our natural animals, so sorry, we need to protect our animal kingdom. So that's why in order to protect them, there are many national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves has been set up to save the flora and fauna of the country. And time to time government introduce like various projects to save the extincting species of flora and fauna. You need to understand that to maintain the ecological balance also, we have to preserve our flora and fauna, because otherwise the whole ecological balance will be disturbed, and ultimately we human beings would be like suffering. We will talk about in detail about the monsoons. Then we will take up the natural vegetation. What are the different kind of forest, different kind of flora and different kind of fauna we are having in India. So let's begin with the weather. Broadly, the major seasons which are recognized in India are cold weather season, that is winter, which is from the month of December till February. Then we have hot weather season, that is summer, which is normally from March to May. Then we have southwest monsoon season, that is rainy season, which falls in June till September. Then we have season of retreating monsoon, that is autumn, October and November. So when we talk about cold weather season or winter, during winter season, the sun rays do not fall directly in the region, right? And we are having like slanting rays. That's why the temperature is quite low in the northern India. Then in the summer season, we are like the sun rays are more or less directly falling in the region, and that's why the temperature became very high. Hot and dry winds called loo blow during the day, and उसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द डे लू जो होती हैं वो जो चल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस होती हैं. ये जो लू जो होती हैं ये पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादातर पाई जाती हैं, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड ऑल. और इनसे दे हैव सीरियस, दे कैन हैव कॉज serious health issues also. So that's why to encounter that, people keep on eating, drinking very, bel ka sharbat and khas ka sharbat, aam pana, this kind of things to encounter the heat which is like there outside in the atmosphere. So if we talk about the rainy season, that is the southwest monsoon season. और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि साउथवेस्ट मानसून जो है लाइक साउथ में केरला से एंटर करता है मानसून हमारी कंट्री के अंदर, और वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट जो है मूव करता है. जो अरेबियन सी से आता है वो केरला की तरफ से एंटर करता है, फर्स्ट एंट्री वहीं से होती है. बे ऑफ बंगाल से जो आता है ये टुवर्ड द लैंड्स चलता है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हैवी रेनफॉल कॉज करता है. बेसिक जो सीजन होता है रेनी सीजन का वो जून टू सितंबर होता है, राइट. और यही मेन रेनी सीजन कहलाता है. और जितनी भी लाइक जो मॉनसून विंड्स होती हैं जो आपकी साउथ से वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करती हैं. और ये जो मॉइस्चर्स होते हैं, ये जो विंड जो होती हैं, जब माउंटेन बैरियर्स को स्ट्राइक करती हैं तो रेनफॉल होती है. और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो है आउटर हमारी कंट्री के बाहर तक नहीं जा सकती थैंक्स टू द हिमालयाज. अगर वो ना होते तो हमारा भी एक डेजर्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट हो जाता, क्योंकि ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये क्रॉस कर जाती इंडियन सब कॉन्टिनेंट को. Then we have seasons of retreating monsoon, that is autumns. ये वो मानसून है जब मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है आपकी जो विंड्स हैं वो वापस मूव करती हैं, और इसी को ही हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. और इस पीरियड के दौरान द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल, राइट. हाउएवर द क्लाइमेट
is about the average weather condition which has been measured over, मैंने आपको उस दिन क्लास में भी ये समझाया था, लाइक क्लाइमेट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो बहुत लंबे स्पैन के लिए कंडीशन रहती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती हैं, उसका एवरेज होता है क्लाइमेट जो होता है, लाइक 30 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली आपका इसके अंदर एस्टिमेशन लिया जाता है. The climate of India has been broadly described as monsoon type. Monsoon is a word which is taken from an Arabic word मौसम. मौसम से लिया गया है और जो है monsoon type of climate है due to India's location in the tropical region. ज्यादातर जो रेन है वो मॉनसून विंड्स लेके आती है इंडिया के अंदर. और इंडिया आपको पता है इट्स एग्रीकल्चरल कंट्री, और किसी भी एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए दिस रेनफॉल, दिस मॉनसून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Because good monsoon means adequate rain and bountiful crop. So the climate of a place is affected by its location, altitude, distance from sea and relief features. यानी कि किस तरह का relief feature है, हम like कैसे है, पठार है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, किस तरह के उसके रिलीफ लैंडफॉर्म्स किस तरह के, उस पर भी डिपेंड करता है. ओके, सो इसी पैराग्राफ में यू नीड टू अंडरलाइन दैट जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वेयरएस द्रास एंड कारगिल एंड जम्मू आर फ्रीजिंग कोल्ड. कोल्डेस्ट प्लेस भी पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए. द्रास कारगिल जो है वहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं, जबकि जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं लाइक मुंबई, कोलकाता, यहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट होता है. मॉडरेट मीन्स नॉट इन एक्सट्रीम, ना तो ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा. देन द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन दिस पैराग्राफ इज दैट मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एंड दिस प्लेस इज इन आवर कंट्री. सो देन मौसिनराम जो है मेघालय में, वहां वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल हो रही है, जबकि जैसलमेर के अंदर ऐसी जगह पे राजस्थान में जहां बारिश ही नहीं होती, पूरा पूरा साल बारिश नहीं होती. तो डाइवर्सिटी, मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन किया था, आई हैव टोल्ड यू दैट वेरी मीन्स डाइवर्सिटी इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इन इंडिया. क्लाइमेट हो, लैंड फॉर्म हो, लोगों के कल्चर्स हो, बिलीव हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो. सो वही चीज हमें यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में देखने को मिल रही है. Then when we talk about the natural vegetation मतलब हमारा होता है जंगलात से जो हमारा वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ है हमारे सराउंडिंग नेचुरली जो ग्रो कर रही है, राइट, उसको हम जो है इस कैटेगरी के अंदर करेंगे. और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं हमारी कंट्री के अंदर, क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशंस हैं, राइट, ग्रासेस हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, किस वजह से होती हैं, क्या क्लाइमेट क्या चीज उनको इफेक्ट करती है, रेनफॉल कितनी इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, thorny bushes, mountain vegetation and mangrove forest. So let's begin with tropical rainforest. जिनको जो आपके tropical rainforest हैं ऐसे एरियाज में होते हैं. रेन फॉरेस्ट एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसे एरिया में होते हैं जहां पर कि आपको हैवी रेनफॉल जो है रिसीव कर रहे हैं. और ये इतने डेंस होते हैं, ऐसी कैनोपीज बना देते हैं पत्तियों की कि जो सनलाइट होती है, sunlight fail to reach the ground. So many species of trees are found in these kind of forest, और इनको evergreen forest भी कहा जाता है, because in this type of forest never all the trees shed their trees together. They shed their leaves at different interval, different types of year. Therefore they always appear green and are also called evergreen forest, right? Important trees found in these forests are mahogany, ebony, rosewood. Andaman and Nicobar Island, part of northeastern states, and a narrow strip of western slope of the Western Ghats are home of these forests. Look, what is important in this paragraph? You need to know the location. You need to know that why they are called, why this particular like name is given to them. Then what are the locations in India where these kind of vegetation is found? Then what are the different kind of like main trees or main
things which main plants, things which are found in this kind of particular forest. This you need to learn. Then if we talk about tropical deciduous forest, ये जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है मॉनसून फॉरेस्ट. क्यों? एक तो ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहां पर सीजनल रेनफॉल होती है, और उसकी वजह से ये इनका एक ड्राई पीरियड भी आता है जब ये सारे पेड़ जो हैं अपनी लीव्स को हैं शेड कर देते हैं, और इस वजह से इनको ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है. एंड अगर इसके इम्पोर्टेंट ट्रीज की बात करें तो इसमें सल, टीक, पीपल, नीम, सीसम होते हैं, और ज्यादातर इस तरह के फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा and in some part of Maharashtra we find this kind of forest. Next, as we know that we have different kind of climate, we have different kind of landforms, and this vegetation depend on all these factors. So we have deserts also, and we all very well know that in desert we get thorny or bushy kind of vegetation. This type of vegetation is found in dry areas of the country. The leaves are in the form of spines. किस लिए? ताकि water जो है वो loss of water ना हो, इसलिए बहुत छोटी नुकीली कांटे जितनी जो होती है पत्तियां होती हैं. Cactus, कीकर, बबूल and khair are important kind of like vegetation which is found in desert or dry areas. And you will find this kind of vegetation in Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slope of Western Ghat and Gujarat also. So the name of states you need to learn. This is very, very important. Then if we talk about the mountain vegetation, a wide range of species is found in mountains according to the variation in height. Height के ऊपर depend करता है. अगर आपकी height जो है वो 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक है, तो most of the जो trees है वो conical shape में होंगे, because वहाँ snowfall होती है और वो उन trees के ऊपर रह ना जाए, इसलिए इसकी cone shape होती है ज़्यादातर trees में. And what kind of these? That's why these trees are also called coniferous trees because of their shape. And cher, pine, deodar are the important trees which are found in this kind of coniferous forest. Okay. Then the last type of vegetation which we need to learn about is mangroves, and these forests survive in saline water. Very, very important line. Please mark this. What kind of vegetation is found in saline water? नमक के पानी में इतनी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन ये मैनग्रोव जो आपके फॉरेस्ट हैं वो saline water में ही पाए जाते हैं, और ज्यादातर सुंदरबन जो है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पे भी पाए जाते हैं, राइट. और इसकी जो सबसे फेमस स्पीशीज है ट्री की इन मैनग्रोव्स की, वो सुंदरी होती है, इसी वजह से इनका नाम सुंदरबन पड़ा है. तो ये आपको लर्न करना है. यू नीड टू मेमोराइज डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन विच आर फाउंड इन इंडिया. देन यू नीड टू लर्न द वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड ओवर देयर, राइट. नाउ वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट. The next thing is why the forests are so important for us. So the picture on page number 61 is depicting why the forests are necessary. They gave us plenty and plenty resources. They are like warehouse of resources. So forests are very useful for us. They perform various functions. First of all, plants release oxygen that we breathe and they observe carbon dioxide and purify the atmosphere. So they are very important for this thing. Then secondly, the roots of the plants bind the soil. पकड़ के रखती है मिट्टी को. अगर पेड़ पौधे ना हो, जंगल ना हो, तो soil erosion इतना हो जाए कि हमारे पास अच्छी सॉइल ही नहीं हो, अच्छी पैदावार ही ना हो, और फिर हमारे को इन सब चीजों की स्कैरसिटी पड़ जाए. Apart from this, forest provide us with timber. फॉर फर्नीचर बनाने के लिए पहले फ्यूल जलता था, ईंधन जलता था, लकड़ियों को जलाया भी जाता था. जानवरों का चारा मिलता है, बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलती हैं, हर्ब्स मिलती है, लाख मिलती है, हनी मिलता है, गम मिलता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्यों खत्म हो रही है, एंडेंजर्ड क्यों होती जा रही है स्पीसीज? बिकॉज जो वो फॉरेस्ट ही नहीं रह गए, फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है. फॉरेस्ट जब नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ कैसे सरवाइव करेगी,
Then natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of the tree. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of tree. और इसके लिए वनो महोत्सव करते हैं, कितने पोस्टर, कितने कैंपेन्स हम स्कूल में भी करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि प्लांट्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑन वेरी स्पेशल ओकेजन्स वी लाइक encourage children to plant saplings. उनको वाटर करना, उनको सिखाना कि आप पौधे लगाइए कितने ज्यादा, ठीक है. तो यूजेस आपके सामने ही है. अगर हम पेड़ को कट कर देंगे तो हाउ विल वी फुलफिल ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स विच आर बीइंग लाइक सप्लाइड बाय द ट्रीज, बाय द फॉरेस्ट. अंडरस्टूड. देन आपको सबको पता है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, कितने अवेयरनेस के लिए वनो महोत्सव मनाया जाता है. हम वाटर को कैसे याद है, कैसे प्लांट्स को हम जो वाटर का आपका डेली वाटर की सप्लाई का वाटर बॉटल में पानी भर जाता है, बच जाता है, उसको वेस्ट ना करके हम उसको वाटर करने के लिए आपको इंड्यूस करते हैं. तो दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग यू अवेयर, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, जस्ट टू मेक यू like aware that these are very very precious things for us and we need to preserve them because they are in danger. We need to preserve them and it is like our need to protect them, because if these things, this vegetation, flora, fauna is not there, then the whole balance of this life will be disturbed and we will extend. They are extending, but if this keep on going, then we will also extend. So next is wildlife. We have talked about plants. Now let's talk about the wildlife. Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Right? Reptiles क्या होते हैं, जैसे snakes वगैरह जो रेंगते हैं. Amphibians क्या होते हैं, लाइक जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं. टेरेस्ट्रियल्स जो आपके लैंड के ऊपर करते हैं. देन मैमल्स जो बच्चों को फीड करते हैं, ठीक है. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब जो हैं, इन सब का लाइक देयर होम. व्हाट आर दीज फॉरेस्ट? दीज फॉरेस्ट आर देयर होम. जैसे ही फॉरेस्ट कटता है तो इनका पूरा बैलेंस खराब हो जाता है और इनकी लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड हो जाती है, ठीक है. The tiger is our national animal. You all know this. It is found in various parts of our country. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. ठीक है. गिर फॉरेस्ट है गुजरात में जहाँ पे एशियाटिक लायंस आपके मिलते हैं. एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. असम के अंदर आपको एक सींग वाला जो राइनोसोरस है, एलिफेंट्स हैं, वो मिलते हैं. one mark so many 1 mark questions could come from this particular paragraph. Which forests are found in Gujarat? Gir forest, right? Gir forest are home to which animal? Asiatic animal, this Asiatic lion. Then which animals are found in the forest of Assam? Elephants and one-horned rhinoceros are found in the forest of Assam. Then elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels are found in Great Indian Desert and Run of Kutch, right? Wild goat, snow leopards, bears, these are all like animals which live in cold climate. So they are found in Himalayan region. Beside these, many other animals are found in our country, such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal, etc. India is equally rich in bird life. Bird life में भी India इतना ही rich है. Peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeon, मैना, geese, bulbul and duck. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. आप कभी बर्ड सेंचुरीज का मैप देखिए, आपको पता लगेगा कितनी जगह पर बर्ड लाइफ को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनके लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं. दे प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, ताकि उनको मार के खाया ना जाए, उनका शिकार ना किया जाए. लाइक आप ये जस्ट आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. Can you name 5 birds that are commonly found in your area in the doubt class? Just be prepared with this question and we will be discussing this in the doubt class. Okay.
There are several hundred of species of snakes found in India. Cobras and kerats are most important among them. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. Many species has already become extinct. पढ़ा है ना आपने डोडो बर्ड वगैरह के बारे में, जो कि अब है ही नहीं, जो कि खत्म हो चुकी, जिनकी पूरी स्पीशीज, और आप मुझे 4 और बताएंगे जिनकी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं. In order to protect them, many national park, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. The government have also started Project Tiger to save tigers and Project Elephant to protect elephants. Can you name some wildlife sanctuaries of India and locate them on map? Come up with, like, get information about the various wildlife sanctuaries and in which state they are located. We will be discussing this in the out class. You can also contribute in conserving wildlife. कैसे बचा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को? आप उनके जो स्किन से, उनके बॉडी पार्ट से जो भी चीज़ें बनी हैं, उनकी बोन से या उनके हॉर्न से, फर से, स्किन से, उनको यूज़ में लाना बंद कर दीजिए. जब आप डिमांड ही नहीं करेंगे तो उनकी किलिंग अपने आप स्टॉप करनी पड़ेगी. सप्लाई ही नहीं करेंगे उसको कोई भी. एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक in the first week of October. Underline this thing. Why we celebrate this thing? We celebrate this thing to create awareness of conserving the habitat of the animal kingdom. Again, the migratory bird. Migratory bird क्या होते हैं? जब जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, जब वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो वहाँ से जो आपकी बर्ड्स हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आ जाती हैं. जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मली दिसंबर में आती हैं और अर्ली मार्च, गर्मियाँ शुरू होने से पहले वापस अपनी कंट्रीज से चली जाती हैं. और जैसे पेलिकन के बारे में इसमें बताया है, साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया है, स्ट्रॉक, फ्लेमिंगो, पेनटेल, ये सब जो हैं अपनी कंट्रीज से विंटर सीजन्स में हमारे यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ पर स्टे करती हैं. तो दिस वॉज ऑल वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, जस्ट गो थ्रू दिस फैक्ट्स, लर्न देम, बिकॉज यू हैव टू रीड दिस इन द हायर क्लासेस ऑल्सो. So we will be taking up all your doubts in the doubt class. That's all from my end in this chapter. See you in the doubt class. Bye-bye.